Okay, so first of all 49th जो था, this is actually an ellipse, because ये एक सर्कल है जिसके ऊपर तुमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, दैट्स व्हाई इट्स एन एलिप्स। मतलब ओरिजिनली साइन ओमेगा टी और कोसाइन ओमेगा टी के टर्म्स में तुम्हें सर्कल दिया हुआ था एक, राइट, वैसा पैरामीट्रिक। फिर तुमने उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया बिकॉज एक्स जो है दैट्स जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन ओमेगा टी कोसाइन ओमेगा टी। सिमिलरली वाई भी सिर्फ साइन ओमेगा टी कोसाइन ओमेगा टी का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई इट्स एन एलिप्स, राइट। और मैंने ये पूरा प्रूव भी किया है कि एक सर्कल को तुम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे तो इलिप्स ही क्रिएट करता है। वो वीडियो को तुम देख लो। बट एनीवे 50 हो गया था, 49 भी हो चुका है अब, सो इट्स गोइंग टू बी इलिप्स। इसका आंसर ए रहेगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू 51। टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर सुपरइम्पोज्ड ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। क्या हो रहा है ये थोड़ा सा, ओह अच्छा ऐसा है ये थोड़ा सा। ये हमेशा ऐसे पता नहीं कहाँ पे चला जाता है। एनीवे अब कहाँ पे जा रहे थे हम? 50, राइट? ओके ओके 51। Okay, two simple harmonic motions, a sin omega t cosine omega t, superimposed on a particle of mass m. The total mechanical energy of the particle is, अच्छा देख तो combine करने भी क्या मिलेगा मुझे, square root 2a sin of omega t plus pi upon 4, well whatever, right? अपने को चाहिए, we want the total mechanical energy of the particle, हाँ। ओके, तो ये स्ट्रिंग वेव नहीं है, जस्ट अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज द मैक्सिमम एनर्जी, सॉरी द एक्चुअल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, राइट। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रहने वाली है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रहेगी? स्क्वायर रूट 2a टाइम्स ओमेगा, उसके बाद स्क्वायर कर हाफ एम बी स्क्वायर, आई नो दैट, सो हाफ इसका और या व्हाटएवर, दैट्स गोना बी जस्ट एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो दैट्स आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। 52 is a particle is executing SHM of amplitude A, the main position x equal to 0. Which of the following cannot be possible phase difference between the positions of the particle at x equal to plus or minus a upon 2 and x is equal to minus a upon square root 2? Okay. So plus minus a upon 2 यानी कि कौन से इसमें एंगल्स आ गए हैं। सो इसका फेज हो सकता है तो 30 डिग्री और इट कैन बी 150 डिग्री, सो 180 minus 30 डिग्री, राइट। और माइनस ए अपॉन, ओके दैट्स लाइक नेगेटिव 45 डिग्री। और सिमिलरली तुम दूसरा वाला कर सकते हो, दैट इज 180 एंड माइनस 45 लाइक यू नो द डील, 125, राइट। वेट व्हाट, या तो 45 डिग्री एंड उसके अलावा क्या था, राइट, 180 माइनस व्हाट, 180 प्लस 45, सो 125 डिग्री। ओके, अब अपने को इनके बीच के एंगल्स ढूंढने हैं। ऑफ कोर्स अपन क्लॉकवाइज जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, सो दोनों टाइप के डिफरेंसेस अपने को देखने हैं। सो 30 to 125 अपन जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे एंड दैट्स गोइंग टू बी 95 डिग्री, क्या है यहाँ पे, ओके। अपन उल्टा जाएंगे देन इट्स, या ओके, सो इट विल बी 360 माइनस 95 डिग्री व्हिच 200 के ऊपर आता है, सो तो भूल ही जाओ। व्हाट एल्स, सो 30 से 125 हो गया, 30 से 150 यानी कि कितना, और नहीं अपने को ऊपर से नीचे जाना है, राइट। सो 30 to 150 सही नहीं होगा बिकॉज वांट टू गो from a upon 2 to negative upon square 2, तो फिर 30 से हम 45 जा सकते हैं, that's going to be 15 डिग्री, और शिट इज नेगेटिव 45 डिग्री, सॉरी। तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, राइट, जब तुम क्लॉकवाइज जाओगे। व्हेन यू विल गो एंटी क्लॉकवाइज, हाँ वो बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा एंड दैट्स नॉट इन द ऑप्शंस। सो ए तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। ओके ये तो हो चुके हैं, व्हाट अबाउट दिस, सो 150 से नेगेटिव 45 डिग्री, हाउ मच इज दैट एंगल गोइंग टू बी, दैट्स गोइंग टू बी 150 प्लस 45 ऑफ कोर्स व्हिच इज 195। सो ओके डी भी नहीं हो सकता, बट देन व्हाट इज, जो अपन अगले दूसरे पास से जाएंगे, लाइक 360 माइनस 95, सॉरी 195, राइट, या 165, अच्छा ठीक है, तो बी भी नहीं हो सकता एंड सिंगल करेक्ट टाइप है, सो ऑफ कोर्स सी इज द आंसर। बट स्टिल अपन सारे एग्जॉस्ट कर लिए थे, सो ये कॉम्बिनेशन तो अपने दोनों देख लिए, व्हाट अबाउट दिस एंड दैट, सो राइट, वेट इज दैट करेक्ट और नॉट? I mean, it must be, right? Wait, वो नेगेटिव 45 डिग्री है एंड देन, और जो दूसरा वाला रहने वाला है इसका भी 180 प्लस 45 डिग्री एंड दैट्स नॉट दिस थिंग, इट्स 225, सॉरी। ओके इट शुड बी लाइक दैट। वेट, पर फिर इसका कॉम्बिनेशन से अलग हो जाएगा, राइट?
Oh, that's like 200 so it's 195 degrees once again और फिर 180 minus that that's only 165 degrees sorry 360 minus that right तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं सो ठीक है ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट दोनों सेम ही चीज है व्हाट अबाउट इन दोनों का कॉम्बिनेशन हाँ तो फिर वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबका ना या बेसिकली बिकॉज ये 180 माइनस वो है ये 180 माइनस ये है सो हाँ व्हाट डज दैट मीन कि या जस्ट सी इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट यू गॉट 53 A particle performs HM on x-axis with amplitude a and time period t. The time taken by the particle to travel the distance a upon 5 starting from rest is oh so starting from rest मतलब कोई तो भी extreme position पे think about it तुम्हारा पार्टिकल ऐसा जा रहा है राइट इसकी जो y एक्सिस दैट्स द x वैल्यू समझ रहे हो ना हमेशा करता हूँ मैं सो यहाँ पे रहेगा एंड देन उसके बाद में a अपॉन 5 मतलब कि अब कितनी हाइट बची है 4/5 a राइट सो yeah okay pi upon 2 minus ये वाला angle that's cosine no sine inverse of 4/5 yeah so basically क्या ये जो angle रहेगा that's gonna be you know yeah ये 4/5 होगा ना so that's gonna be cosine inverse of 4/5 so that's this angle okay और इसने कितना time required right so that's this cosine inverse of 4/5 इसने angle cover किया है so 2 pi upon t times that sorry no t upon 2 pi t upon 2 pi times that is the time required जो कि कहाँ पर है so this guy b next question t is a time period right yeah next 54 is a uniform rod of mass m length l is hinged at its midpoint in such a way that it can rotate in the vertical plane about horizontal axis passing through the hinge okay one of the ends is attached to spring of spring constant K which is unstretched when the rod is horizontal. So horizontal this string is unstretched. If this end is now given a small displacement, तो फिर थोड़ा बता सकते right. Then and released angular frequency of the resulting motion is okay. थोड़ा बहुत तुमने इसको change किया and it's released angular frequency of course. So जब ये जैसे theta इसने cover किया distance मैं L upon 2 का R बोल रहा हूँ के लिए तो तब ये चीज क्या हो जाएगा राइट दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज अप्रोक्सीमेटली आर थीटा यू कैन से सो k times r times theta that's this force and that times ये चीज but okay this angle is theta that's going to be r cosine theta approximately r don't you agree second degree terms अपने को लेनी नहीं है so just r squared okay that's the torque upon the inertia which is mr squared upon 3 right this is so fold कर डालना about this point and you get the thing तो इसका मतलब क्या हो गया दिस इज अवर एंगुलर एक्सेलरेशन और नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन व्हाटएवर ये कैंसिल हो जाएगा जिसमें भी 3k अपॉन m टाइम्स थीटा मेक सेंस ये जो चीज है दैट्स गोना बी आवर ओमेगा ऑफ कोर्स ओमेगा और d थीटा अपॉन dt अलग-अलग चीज है ये याद रखना बट या थिंग इज अपने को चाहिए क्या वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गोना बी स्क्वायर रूट ऑफ 3k अपॉन m सो c इज द आंसर नेक्स्ट 55 The time period of free oscillation of the system shown here if m1 is pulled down what m1 okay and okay it's pulled down a little and force constant of the spring is k and masses of these fixed pulleys are negligible is okay तो इसको तुमने नीचे पुल किया and then fine makes sense so अगर ये सिस्टम कर रहा है then ये भी सिस्टम करेगा and what we want just want the time period then instead of having this going down by x अपन इसको ऊपर भेज सकते हैं x because यहाँ पे दो x कोलैप्स होगा that's why यहाँ पे 2x नीचे आएगा right okay cool so you know इसका acceleration downward क्या होने वाला है 2a जहाँ पे a acceleration है इसका upward and what will that be actually that's going to be g minus t upon m1 right okay and a is just equal to actually 2t because those में strings है so 2t upon m2 and yeah ये तो यहाँ पे fixed है ना so no big deal and minus g but also you got kx so 2t upon m2 minus kx upon m2 and minus g so अपने को yeah and right अपने को क्या चाहिए अपने को t नहीं चाहिए right so just have to figure out कि a क्या होने वाला है no big deal okay अच्छा ये सब कुछ m1 m2 के टर्म्स में लिखना है just hate this ठीक है no big deal we can do this क्या हो जाएगा 2m1 अच्छा वो 2 तो ऑलरेडी वहां पर है
So we'll actually have 4m. So 4m1 plus m2 times a. तो मैं अगर इनको ऐसे ऐड कर दूँ, it's gonna be 2m1g. okay, और फिर यहाँ पे हमने सिर्फ m2 से मल्टीप्लाई किया है, ये सब कट जाएगा, it's gonna be just minus kx minus m1, sorry m2, यहाँ पे m2 है, m2g, like that, right? That makes sense. So ये क्या हो रहा है? Some kind of, okay, so 2m1 minus m2 times g minus kx and whatever. So basically a is just equal to minus k upon 4m1 m plus m2 and then you got x minus x naught. I know x naught अपने को अभी तक पता नहीं है, but whatever it's going to be. Yeah, okay, that makes sense. So इसका मतलब है कि जो angle of equals is gonna be equal to square root of, हाँ ठीक है ना, तो टाइम पे डायरेक्ट निकालो 2 pi square root of 4m1 plus m2 upon k, जो कि है option C, I guess. Okay, next question, 56. Delete one another. 56 is a rod of mass m and length L is hinged at one end and carries a block of mass m at its other end. So rod को हमने hinge किया, mass m on the other end, a spring of four constant k1 is installed at distance of a from the hinge. Okay, another of force constant k2 is at distance b from what? अच्छा b दिखाया. Okay, if the whole arrangement rests on smooth horizontal surface. Okay, अच्छा ये जो है vertical view है. So the vibration, frequency of the vibration is right, तो ऐसे समझ में है, makes sense. And ये angle, so ये जो distance है a, this is b, fine, no big deal. Can do this thing. Suppose ये angle theta से change हुआ, right? So what do we know कि a theta is the extension in k1, right? Okay, डायरेक्टली टॉर्क निकालो, ये करने की जरूरत नहीं है, we just, yeah. So k1 में फोर्स क्या रहेगा? It's gonna be k1 times a times theta. Okay, और उसका रेडियस फ्रॉम दिस हिंज पॉइंट, that's gonna be a, so a square. और आई गेस ये सब कुछ हाँ टेबल पर है, so no gravity involved in this. ओके, और ये जो है इज गोइंग लाइक, हाँ तो ये इसको खींच रहा है, सो इट्स एक्चुअली प्रोड्यूसिंग एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और इसको ये कंप्रेस कर रहा है, इट्स आल्सो प्रोड्यूसिंग एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. सो दोनों को अपने को ऐड करना है, k2 d square theta, दिस इज द टॉर्क अपॉन द इनर्शिया. सो ये क्या है? रॉड ऑफ मास m, लेंथ समथिंग एंड लेंथ, अरे यार लेंथ हमने दी भी नहीं, बता देते एटलीस्ट, कैपिटल एल अपन अज्यूम कर रहा है, बट व्हाटएवर. So inertia is going to be ml squared upon 3 plus small m times L squared, right? Yeah. This is going to be equal to an angular acceleration or deceleration, whatever. So theta times ये सारी चीज k1 a square plus k2 b square upon L squared times m upon 3 plus small m and all of that times theta, right? So square root of all of that, right? I mean, you know the deal. Okay, और वो कहाँ पे मिलेगा अपने को? So you just want a time period, right? No, we want the frequency of the vibration. Okay, so that's supposed to be, let's say 1/2 period. क्यों डाला है इन लोगों ने? Yeah, because omega is 2 pi times that. So because of that, that's why 1/2 pi times इसका square root. और वो है I guess A option. नहीं, हाँ, okay, it is the thing. So A is the option. Next question, 57. 57th is m1 m2 are connected with a light inaccessible string with mass m1 lying on smooth table and m2 hanging. Okay, जो भी है smooth table, huh? Okay, which is initially unstretched and the system is released from rest. Angular frequency ढूंढनी है. Tension in the string is 0 when system is released. In the string is 0 when the system is released. How can you say that? No, because like this is g minus half. Tension रहेगा इसमें. It's as if ये spring काम नहीं कर रही है, but tension तो है still. Right, initially क्या है? Unstretched, right? Okay. So no, C is just wrong. Maximum displacement of m1, that will be, तो maximum displacement कब होगी? Whenever dx upon dt becomes 0, which means कि kinetic energy 0 हो गई दोनों की. तो yeah, just half kx are equal to m2 times x, right? m2 times g times x, of course. What does that mean? Half kx square is equal to m2 times g times x. That just means कि
X should be equal to 2m2g upon k, right? So no, not this thing. It should be 2m2g upon k. ये तो गलत है. D is also wrong. Okay. Right, either X equal to 0 or this thing. System performs SHM with angular frequency ढूंढ लिया अपने को. चलो ठीक है, angular frequency ढूंढ लेते हैं, no big deal. Suppose इन लोगों ने x extension दिया अपने को, then what you have just got kx in this direction. हाँ ठीक है ना, कर ही लेते, तो what's big deal? Oh, we actually want the acceleration. So a is equal to g minus t upon m2, and a is also equal to t upon m1 minus kx upon m1, right? What does that mean? m1 plus m2 times a, that's going to be equal to m2g minus kx, right? Yeah. So right, अपने को सिर्फ ये टर्म का देखना है. So like k upon m1 plus m2 उसका square root. That's all we care about. That's the angular frequency, right? Which is option B, I guess. Next question. I mean, what could go wrong? I don't think anything could go wrong. Next, 58. 58 is statement 1. Oh, okay. ये एक type of question आ गया. Motion of ball bouncing elastically in vertical direction on a smooth horizontal floor is periodic motion but not SHM. What, a smooth horizontal floor? So floor उसको in fact effect भी नहीं कर रही उसके, you know, XY direction. We just vertically go right. So it's a periodic motion but not SHM. Of course, it's not SHM. It's just a free fall, you know. Okay, motion is SHM when restoring force is proportional to displacement from mean position. Yeah, that's right. So both are correct, but 2 is not correct explanation. So A is the thing. Okay, 59. A particle simultaneously subjected to two simple harmonic motions of the same frequency, same amplitude will perform SHM only if the two SHMs are in the same direction. No. Wait. अच्छा तुम okay like that, huh? Oh, that's interesting. So तुम बोल रहे हो कि v1 वेक्टर, एक काम करो, a वेक्टर बोलते हैं, a वेक्टर and then sine of omega 1t और same frequency, right? Okay, same amplitude. अच्छा same amplitude बोल रहे हो, fine. So a sine of omega t, but then इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि दो वेक्टर्स है ना. Oh, you know what, अगर frequency same है that, yeah, okay, all you can do is like say sine omega t and then a vector plus b vector, जहाँ पे a vector b vector amplitudes थे. So ये कोई तो भी constant vector रहेगा and that sine omega t, which makes sense. That's going to be SHM. So yeah, it's an SHM. No, not necessarily that these two should be in the same direction. No. Right, just wait a second, huh? There is a doubt though. I don't know कि अगर उसमें phase difference रहा, then what does that make it, right? But of course A तो incorrect है because अपन ने counter case निकाल लिया. But what if their phase is different? So yeah, then what will happen? I don't know. Think about it. तो इसमें एक sin omega term रहेगी और एक cosine omega term रहेगी. And yeah, okay. How do you even make use of that? It's kind of a linear combination of something, right? So necessarily SHM नहीं है. Okay. और क्या है? A particle simultaneously to each other. What? To each other. The particle can be in uniform circular motion. Each other क्या बोल रहे हैं? क्या ग्रामर हो गया है? Anyway, हाँ ये सही है कि दो SHM तुमने लगाए तो वो सर्कुलर मोशन कर सकता है, राइट? So x डायरेक्शन में sin omega t में, so phase difference पे डिपेंड करता है. Will perform SHM only if two are in the same direction? No. It can also perform SHM if these are not in the same direction. Statement 1 is false, I guess, and statement 2 is true. Okay, next. 60. A tube of given shape has total length 2l and इनका phase difference कुछ दिया नहीं लोगों ने. Okay. 2l and its area of cross section is S. Its bottom and upper halves are filled with two non-viscous, non-compressible liquids of density
3 रो and row respectively if its motion is simple harmonic then find its angular frequency blah blah blah. हाँ ठीक है ना. सो एनर्जी इक्वेशन अपने को यूज करना है इसमें. क्या बोला है कि टोटल लेंथ जो है वो 2l है राइट. सो एक हाफ की l रहने वाली है. वेल व्हाटएवर वी डोंट केयर अबाउट दैट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज s. हाँ ठीक है चलो करते हैं इसको. सो सपोज तुमने इसको x ऊपर ले लिया देन व्हाट वी हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी से चेंज हुई होगी. सो व्हाट्स डेल्टा u. अगर तुमने इसको डेल्टा x से ऊपर लिया है जस्ट टॉक अबाउट du इंस्टेड. सो व्हाट इज du. अगर तुमने इसको dx से ऊपर लिया है तो तुमने राइट ये पूरा जो बल्क ऐसा ऐसा समझो ना कि तुमने एक 3 रो कैसे यहाँ से तुम्हें निकाल के तुमने यहाँ पे रख दिया और तुमने सिमिलरली एक 3 रो यहाँ से काट के यहाँ पे रख दिया राइट. या फिर तुम सोच सकते हो कि तुमने ये 3 रो यहाँ से काट के यहाँ पे रख दिया. सो वेट व्हाट दैट्स वियर्ड. बट इसका मतलब है कि हाँ आई मीन ऑफ कोर्स वो हाइट डिफरेंस अभी कितना है दैट एक्चुअली इज द थिंग राइट. तुम्हारे उसमें ये है व्हाट वी आर सेइंग इज कि इसका हाइट डिफरेंस कुछ भी है मतलब ये एक्चुअल इनिशियल मार्क था राइट. सो इस हाइट डिफरेंस को विल जस्ट कॉल एज आई डोंट नो h या फिर x राइट. वी कॉल दिस एज x. ओके और अपन लोग बोल रहे हैं कि राइट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो थी विल जस्ट से दैट इज 0. सो यहाँ पे क्या रही होगी पोटेंशियल एनर्जी. सो यू वुड जस्ट बी इक्वल टू क्या हो गया बेसिकली तुमने ये जो ब्लॉक था इसको काट के वहां पर चिपका दिया राइट. सो तुमने इसका सेंटर ऑफ मास कितने से मूव किया बाय x ऑफ कोर्स. तो 3 रो टाइम्स 3 रो टाइम्स इसमें जो अपन ने वॉल्यूम मूव की दैट इज जस्ट डेल्टा v टाइम्स अज्यूम x छोटा है ओके. सो डेल्टा ओके वॉल्यूम कितनी अपन ने मूव की x टाइम्स ऑफ the area right. okay इतनी अपने वॉल्यूम की by x sorry इतना मास मूव किया in the times g that's the thing yeah I guess but ये तुमने जो ये वाला जो वाटर है वो भी तुमने मूव किया तुमने यहाँ का काट के यहाँ पे चिपका दिया. सो उसके लिए नेगेटिव लाना पड़ेगा. सो नेगेटिव 1 रो टाइम्स x s टाइम्स x g that's gonna be equal to 2 रो s g x squared right. that's u और काइनेटिक एनर्जी क्या है. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर राइट. ओके पूरी लेंथ कितनी है l. अच्छा इसमें ये लेंथ क्या रहेगी l सॉरी हाफ लेंथ l है ना. सो इसमें लेंथ l रहने वाली है. सो जस्ट हैव 3 रो l टाइम्स सरफेस एरिया s दैट इज द वॉल्यूम. जो पूरी वॉल्यूम should be 3 रो यार क्या कर रहा हूँ. ओके दिस इज द मास. सो हाफ m v squared क्योंकि सब कुछ सारे पार्टिकल सेम स्पीड से जा रहे हैं बाय द वे. So there we go and also plus half and then you got rho ls times v square because ऊपर वाला जो fluid है वो भी. So that's just going to be equal to 2 rho ls v square. So अपने kinetic energy मिल गई. We just found out potential energy as well. So इनका combination क्या रहने वाला है u plus k that's equal to क्या हो जाएगा ये 2 रो अपन कॉमन निकाल लेते हैं. गॉट लाइक 2 रो s कॉमन निकालो इनफैक्ट. उसके अलावा क्या बचा. इट्स गोना बी gx स्क्वायर प्लस आई गेस l टाइम्स v स्क्वायर. डायमेंशनली करेक्ट है ये. सो इट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम्स मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर. और ये है या इसमें पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है. इट्स गुड इनफ. सो दिस थिंग इज अ कांस्टेंट दैट जस्ट मींस कि ये चीज एक कांस्टेंट है राइट. उसका डेरिवेटिव ले लो. व्हाट डज दैट मीन. दैट जस्ट मींस कि 2g स्क्वायर आने वाला बट 2 को इग्नोर करो बेसिकली. So gx times dx upon dt that is going to be the velocity plus yeah right. So 2 kya which is l times v times dv upon dt which is acceleration that's equal to 0. I know my acceleration बोल रहा but actually it represents d square x upon dt square which is equal to 0. So basically yeah okay a अच्छा v तो गया ना cool. A is just equal to negative gx upon l. So that makes sense. This is our square of angular frequency. Right, so its motion is simple harmonic, then its angular frequency is just this guy d. ये अजीब है ना कि इवन तो ये सारा इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होने के बाद में भी a square of g upon l हो रहा है राइट. इट्स वियर्ड बट दैट्स द वे इट इज. अपन ने पूरा सही से तो किया या कांट बी एनी प्रॉब्लम विद दैट. ऑफ कोर्स देयर कांट बी. ओके चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन.
होपफुली करेक्ट हो, नहीं तो अपने को वापस पूरा करना पड़ेगा. 61. Okay, in the given triangular sheet 61, uh, PQ is equal to QR is equal to L. Okay, PQ is equal to QR is equal to L, and triangle PQR is equal to 90 degree. Moment of inertia about what? About PR basically, right? So about this guy, right? So you know deal, तुम इसको बस double कर डालो and then you will get this thing. और फिर इसका moment of inertia ढूंढना इतना hard नहीं है, right? Because right इसका तुम yeah it's a square sheet, that's the main thing. तो फिर तुम इसको rotate करो by 90 degree, वो सिर्फ inertia same रहेगा because same configuration phi masses की. फिर yeah perpendicular axis theorem and whatever. So इसका inertia and ये चीज का inertia about this axis is gonna be the same thing. So half तो अपन ले ही रहे. Oh and by the way इसका mass जो है that's gonna be m. So अपने को 2m लेना पड़ेगा. ठीक है, तो अपन पहले तो वो ढूंढ लेते हैं, inertia of this kind of thing, right? ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर रहेगा l l l l इस इन पूरे इसका मास 2m रहने वाला है, उसका inertia क्या है about this axis? It's the same thing as about this axis, right? So yeah, okay, m l upon 2 square upon 3, right? Yeah, but इसमें m के जगह अपने को 2m लेना है because you know दो मास इसमें, right? If that makes sense, right? It should make sense. Yeah, does it? Of course. और क्या हो सकता है? That's the inertia. Okay, once that's done, अपने को सिर्फ इसका आधा लेना है. So you know this is the inertia of the triangle. Easy as that. It's gonna be ml squared upon 4 times c is like 12. So ml squared upon 12, which is option B. Hopefully correct है. I don't know. Next. 62. 62 is, oh okay, ये तो खत्म हो गए. Fine, we'll just check this out. Right answer key. 61. इसमें 61 क्यों नहीं है? So that's gonna be C. Okay, C. That's weird. और क्या है? D then A, then C C B. So 50. Wait, what? Sorry, 57 का क्या है? That's B. Yeah, okay, and then it's A. Then 55 से start. So C C B. Okay, 52. That is C and then D. 50. C C C. Okay, wait. 49 का क्या था? C. Okay, that's weird. 48 C. 47th D. Okay. 46 का D. 45th का A. हाँ 45th का A. 44th A. 43 B. Okay, B D B. Huh? That makes sense. Okay. 40. D D D. 3 D आ रहा है पहले तो. That's right. And then 37. So B C. Okay. 35. C D C. This should be C. Okay. 32. B C. 30. 30 का C है and what about 29? So B D B B. Okay, 26 का B है. Okay, that's weird. 25th C C D. Okay, 22 B. 21 it should be D. Okay, 20 कहाँ पर है? D. 19 A. 18 का D चाहिए and 18 का A है. A. 17 का A. 16 का A. 15th C. D A A. 12th का A है. Okay. 11th मैंने मिस कर दिया. It should be T. Okay, whatever. 10th B. And then once again B. And then C. Then 7th का A. Then 6th का C. 5th का A. 4th का B. Okay.
ओके हाँ ठीक है, मुझे पता है। वेट सेकेंड, उसमें एक और पॉपअप आने वाला है। राइट, थर्ड, okay, B and then A and then A. So B, A, that's supposed to be A. Okay, so now check करते हैं 61 का C क्यों है आखिर। Go up, go up. So तुम बोल रहे हो इसका C है and so it's like ml squared upon 6. Why is that the case? Oh, नहीं सही तो है, सही तो है। For a moment I thought कुछ भी गलत हो रहा है, but नहीं सही है ये। Right, this is also I upon this is Y upon. No big deal, right? I don't get it. Why is it ml squared upon 6? I mean, I got ml squared upon 3, right? Then pura mass जो है that's gonna be this guy. Come on. What is this? Seriously. Moment of inertia about PR is. You know what I'm thinking? Just do it like that. So break करो हजारों तरह से and then yeah, maybe not. It's gonna be like it's really hard to actually figure out. तो वो करना पागलपन रहेगा I guess. Right. Once again, let's check जो अपन ने किया वो सही था कि नहीं था. So what we are saying is कि अगर इसका inertia I है then right, इसका inertia I है then अगर मैं इसको डबल कर दूं then it's gonna be 2I inertia, right? So इसका 2I रहेगा. बट अगर मैं इसके अराउंड निकालूं, इसके अराउंड भी 2I रहेगा. बट देन फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू इसका जो रहेगा दैट्स गोना बी जस्ट राइट. तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस रहेगी उसके थ्रू 4I रहने वाला है. बट वंस अगेन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू इन दोनों का भी फिर 2I होना चाहिए, राइट? बिकॉज इन दोनों का तो सेम है. सो जस्ट इसके अराउंड इनर्शिया ढूंढ लो, दैट्स ऑल यू वांट टू डू, इजंट दैट राइट? सो इसके अराउंड इनर्शिया ढूंढना इतना हार्ड नहीं है. सो मास कितना है 2m, ये लेंथ कितनी है l अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 3, राइट? ऑफ कोर्स. So that's going to be equal to 2y, easy as that. तो इसका मतलब क्या हुआ? That ml squared upon 12 is equal to the inertia. What's the big deal? अब इसमें गलत कैसे हुआ मेरा? Yeah, there's no reason for it to be wrong. I would say इनका C एक्चुअल में गलत है and B is correct, right? इसमें कोई एक्सट्रीम केस भी नहीं है जो कि मैं देख सकता हूँ. This is just too much. Is there something else I can? कुछ तो करो, कुछ तो इसमें होगा जो मैं कर सकता हूँ. No, nothing. But it must be ml squared upon 12. Why is this ml squared upon 6? I don't know. मुझे तो इनका गलत लग रहा है. मैं इसका डाउटफुल हूँ. So let us give them a wrong. बाद में फिर जान लो, क्वेश्चन मार्क देते हैं. We'll see what actually is correct and what is not. Okay, और क्या है? और क्या गलत हुआ? So according to them मेरा 49th A नहीं है and it's C instead. Okay. 49th is okay. So it's a parabola. Really? How is that a parabola? How is that a parabola? I don't get it. मैंने अभी तो प्रूफ किया कि it's just a linear combination of x and it must be an ellipse, right? इसको तुम ग्राफ करके देख लो. Yeah, what's the big deal? इसको ग्राफ करके देख लेते ना. Yeah, let's go to the most thing. So मैं 2 मिनट के लिए इसको हटा रहा हूँ. Okay, Desmos. इतना ही उनको है तो एक बार अपन ग्राफ करके देख लेते हैं क्या होता है. मे बी इट्स पैराबोला, आई डोंट नो. विल सी कि क्या गलत हुआ है. ओके, बस मैं से खींच रहा हूँ. हाँ ठीक है ठीक है. ओके, दिस इज बेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू वांट, वेट क्या था वन सेकेंड वो. It was 2 sine of omega t, right?
So 2 sine, मैं सिर्फ t यूज कर रहा हूँ instead of omega t, and then comma, what else was there? 2 sine of omega t plus pi upon 4. Okay, so 2 sine of, let's say, t plus pi upon 4, right? And this should go from, ये नहीं चाहिए मुझे, just say no, negative pi to pi. और अब देखते हैं कैसा है. सी आई टोल्ड यू इट्स एन एलिप्स. ये देखो ग्राफ, तुम्हें क्लियरली, क्या तुम्हें किसी भी तरह से पैराबोला से दिख रहा है? कम ऑन, टेल मी, इज दिस लुकिंग लाइक अ पैराबोला? आई डोंट थिंक सो, इट्स डेफिनेटली एन एलिप्स. तो पता नहीं इन लोगों ने क्या किया कि इनको पैराबोला मिला. ऑफ कोर्स वो इनकरेक्ट है हर तरह से. सो ये तो हो गया. हाँ, आई डोंट वांट टू सेव दिस चेंजेस. ओके, ओह कम ऑन, रियली ये हमेशा बंद क्यों जाता है? आई डोंट लाइक दिस. वेल एनीवे, सो वो लोग बोल रहे थे कि 49 का सी है. ओके वेट सेकेंड, जस्ट वेट सेकेंड. हाँ, वो स्मार्ट व्यू की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, अदरवाइज ओके. बैक. सो 49 का तुम ए बोल रहे हो. ओके, वो इनकरेक्ट एंड सी इज तुम इनकरेक्ट, ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग. और क्या है? 33rd का उन लोगों ने सी दिया है. हॉलो स्मूथ. ओके, 33rd का मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, इन लोगों ने सी डाला. ओके, rolls without sliding on smooth horizontal surface, head on elastically with another, okay, collides elastically with another smooth solid sphere of the same mass and the same radius. Ratio of kinetic energy of P to that of A just after the collision is. Wait, am I sure? यही correct था. Okay. Hollow smooth uniform sphere A of mass m rolls without sliding on a smooth horizontal surface, collides elastically. Okay. With another stationary smooth solid sphere. Wait, it's a smooth solid sphere, and it's also a smooth uniform sphere. And it rolls with I guess मैंने क्या assume किया होगा कि एक्चुअल में जो है ये प्योर रोलिंग यानी कि रफ है सब कुछ. So maybe that's why. Sorry. Right. So only you have to look for like omega is equal to u upon r. That's all that matters for this first guy, right? ओके, इट्स हाँ कैसा भी हो, हॉलो हो, कुछ भी हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट. दिस हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, दैट्स ऑल यू केयर अबाउट. सो और मासेस सेम है इनके, सेम मास. सो जो पूरी की पूरी इस वेलोसिटी थी उसको इसको या इसने इम्पार्ट कर दी, इजी एज दैट. सो नाउ इट्स मूविंग विद वी नॉट एंड दिस इज जस्ट रोटेटिंग विद ओमेगा. ओके, या ratio of kinetic energy of B to that of A just after collision is. So A के लिए like it's just moving with V naught. So okay, we should say this is V naught. उसकी एनर्जी क्या है? Just half mv naught squared. What about kinetic energy of A? So half I omega square. And what is I? So it's a hollow sphere. So 2/3 of mr squared is inertia about center axis, right? Okay. So 1 upon 2 times 2/3 mr squared times v naught squared upon r squared. Cancel. Sorry, 1/3 of mr, so m v naught squared. So इनका ratio जो रहने वाला है is going to be 3:2. That makes sense, right? So C is actually correct. पता नहीं इसका यानी मैं इस पे इतना क्यों कंफ्यूज हुआ होगा, बट hey whatever, that's the thing. हाँ, मैंने सही से पढ़ा नहीं होगा क्वेश्चन इसलिए. So yeah, okay, इनका ये तो करेक्ट है. एंड 30 का C है. ओके, सो mg sin theta upon 3 mg sin theta upon k. 30 का मैंने किया नहीं था क्या पहले? आई डोंट नो. Question of friction between block of mass m and 2m is this thing. No friction between block of mass 2m in inclined plane. The maximum altitude of the two blocks for which there is no relative motion between the blocks, right? So जो m का acceleration है, right, so उसका maximum acceleration कितना रहने वाला है? a times k of course. Oops, sorry, a times omega square of course, right?
Okay, we kind of know what omega is. Yeah. Or you can just say, okay, जो भी amplitude है at that particular position, it's just like k times amplitude is the spring force. So Ka upon 3m, that's the maximum acceleration. So, right, this must be in that case mu times of g, of course. That should be the thing. Oh, g effective, so g cosine theta, right? Yeah. तुमने को चाहिए क्या? What's the maximum amplitude? It's going to be A is equal to 3m mu g cosine theta upon k, which so इसमें mu कहीं है नहीं. Right, okay, इसमें mu कहीं है ही नहीं. That's the main problem. Makes sense. Okay. No relative motion between the blocks. But something's weird, of course. Wait a second. Gravity भी तो act करने वाली है, right? Okay. Inclined plane or so mu is equal to that. That makes sense. There's gravity as well. Isn't that right? So g sine theta, it's in both of these. Oh, so that's not okay. Maximum acceleration is not this guy. Maximum acceleration तब रहेगी जब it's like, wait, is that correct or not? No, I mean, इसकी जो सिर्फ मोशन है, तुम सिर्फ मोशन देखो इसकी, राइट? दिस इज द थिंग. इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज गोना बी लाइक k upon 3m. No matter what you say, it is the thing along this incline, of course. And is that provided completely by friction? No, it's friction as well as gravity. So ऊपर वाले डायरेक्शन में acceleration like that thing, so that's provided by friction and gravity. और इस केस में it's friction minus gravity that provides it, तो friction बड़ा होगा. Yeah, which means that you got minus g sine theta over here as well. So what does that mean? That mu g and mu is just 2 tan theta, isn't that right? Okay, that just means like g sine theta is equal to ka upon 3. Oh god, मैंने काफी मिस कर दिया. So a is just equal to 3m g sine theta upon k, which yeah is option C. तो तब मैं कंफ्यूज हुआ होगा because I don't know. I think मैंने जो माइनस जी साइन थीटा वो किया नहीं तब. That's the main thing, right? वो मुझे करनी चाहिए थी. ठीक है, अगली बार. What's the big deal? Okay, ये हो गया. So yes, इनका सी दोनों इनकरेक्ट. क्या कर रहा हूँ मैं? हैंडल करना इतना मुश्किल क्यों है? So yeah, ये इनका करेक्ट है. Okay, let's go to 26. पहले जानो ऊपर. 26. So C is incorrect and B is correct. Calculation and what not. At this point मुझे ये सब करने की इच्छा भी नहीं हो रही. So या तुम लोग देख लो कि इसमें क्या exactly correct था, क्या incorrect था. Anyway, that's what it is. So fine. I'll see you guys in the next video. Bye.